Welcome back friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for regular updates. So today we will discuss the very important topic, and before that, about us. Basically we are delivering free education to all of you, and friends, spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes. And learning is priceless, so please do at least. And friends, if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is here, facebook.com/current affairs funda CAF. This one is our Facebook channel. Fine. सो डू सब्सक्राइब। ये हमारा फेसबुक चैनल है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कमेंट्स और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्विज हैं, वहां पर आप प्ले कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। फाइन। एंड फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइन। So this lecture is really very important as per the concern of competitive exams। SI और CI बहुत ही ज़्यादा important लेक्चर है। तो हम इस लेक्चर की स्टार्ट करने से पहले आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना चाहेंगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, और किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका बेस आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। फाइन। तो हम यहाँ पर आज बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें, क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें ऐसी आएंगी। फाइन। एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इन द फॉर्मेट ऑफ bilingual, that means I will explain the contents in Hindi as well as I will explain the content in English also, because a lot of people from South India, they don't know Hindi. That's why I'm telling this lecture in English as well as Hindi. Fine. So let's go. And friends, before that, kindly press the like button, because a lot of people will be benefited from here. That's why I'm telling to you, do like this channel, do like this video and subscribe us. So right now, first thing, that is, we will discuss the simple and कंपाउंड इंटरेस्ट टर्म्स हियर। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या हमारी टर्म्स यूज होंगी, आज हम उन सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट क्या चीज होती है वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। फाइन। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज अमाउंट द मनी borrowed or lent out for a certain period is called the principal, or we can say also sum. So principal amount also known as sum. So I'm writing the definition. What is the mean of principal amount here? The money borrowed or lent out for a certain period. You can write down the definition of this along with me. Fine. For a certain period is called the principal amount. Fine. And the other name of principal amount, that is sum. So we will use both the statement in our upcoming questions, sum as well as principal amount. Fine. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होता है? कोई भी अमाउंट अगर आप उधार लेते हैं या फिर बैंक आप जाते हैं, बैंक से आप जो पैसे लेके आते हैं, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको देता है, ठीक है, और उस पर जो आपका इंटरेस्ट लगता है उसके बाद में आपको वो चुकाना होता है। फाइन। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये वो अमाउंट होता है जिस पर आपको ब्याज देना होता है, दैट मीन्स इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। फाइन। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरेस्ट? सेकेंड थिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है? So friends, extra money paid for using others' money is called the interest. Fine. So let me write down the definition here.
you can also write down along with me: extra money paid for using others money over a certain period, that is called interest. फाइन. इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, प्रिंसिपल अमाउंट वो हो गया, लेकिन जो आपने अमाउंट लिया है, जितने टाइम के लिए आप अपने पास रखते हैं, उसके लिए आपको एक ब्याज देना होता है, एक इंटरेस्ट देना होता है. उसी चीज को हम कहते हैं इंटरेस्ट. जो एक्स्ट्रा मनी आप पे करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट. ठीक है. तो आप जब प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे कर दिया, फिर उसके साथ आपको जो आपने रखने का पैसा दिया है, एक्स्ट्रा मनी जो पेड कर रहे हैं, उस चीज को हम इंटरेस्ट कहते हैं. ओके. एंड फ्रेंड, थर्ड थिंग, दैट इज अमाउंट. हियर what is the mean of amount? Amount will be considered as a principal plus interest. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट. अगर आपने जो पैसा लिया है उसमें आप अमाउंट को ऐड करके टोटल कंबाइंड पैकेज को किसी को रिटर्न कर रहे हैं, उसको हम अमाउंट कहेंगे. और जो आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं उसको हम इंटरेस्ट कहेंगे. और प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बता दिया है. फाइन. सो अमाउंट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस interest. Fine. Let's discuss something here. Interest can be charged. Interest can be charged or apply. Can be charged or apply. First of all, yearly basis. Second thing, half yearly. Fine. Third, it would be quarterly. It may be quarterly. Fine. So interest can be charged in three types. First one is yearly, second one is half yearly, third one is quarterly. Yearly or annually, both are the same thing. ईयरली और एनुअली दोनों सेम चीजें होती हैं. इंटरेस्ट जो होता है वो तीन तरीके से लगाया जाता है. तो आपको सालाना देना होगा, या आप छमाही देंगे जिसका मतलब हाफ ईयरली होता है, या आप क्वार्टरली देंगे. ठीक है, जो हम 1/4 कहते हैं जिसको. ठीक है. तो एनुअली क्या होता है? 12 months, फॉर 12 months. एंड हाफ ईयरली, that is for 6 months, and quarterly, that is for the every 4 months. Fine. So these are the criteria for interest. And friends, it can be in two format, that is simple interest and compound interest, that is CI. Okay. So first of all, we will discuss what is the mean of simple interest here. What is the mean of simple interest? Basically, simple interest is calculated by multiplying the principal amount by the interest rate and number of period in any loan. And friends, simple interest is fixed for every year. Fine. So we can say like this one, simple interest जो होता है वो अब प्रिंसिपल अमाउंट और रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके जो एक अमाउंट पे करते हैं उस पर, उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. और ये फिक्स होता है फॉर एवरी ईयर. ओके. सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सो वी कैन से सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड by multiplying the principal amount by the principal amount by interest and interest rate and number of period in loan.
अगर आपने कोई एक लोन लिया है तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो रेट इंटरेस्ट है और जो टाइम है उन तीनों पर की जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसको अगर 100 से आप डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद में जो भी आपका निकल के आता है, ठीक है, तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा ये हुआ। एंड फ्रेंड्स, काइंडली नोट डाउन हियर वन थिंग, सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर। I will give you very basic examples also. First of all, write down the basic terms and their definition. Fine. So simple interest is fixed for every year. Okay. Next thing, you should also understand what is the meaning of compound interest, or we can say CI. Simple interest is abbreviated as a SI and compound interest is abbreviated as a CI. So friends, compound interest, what is the meaning of compound interest? Compound interest accrues on the principal amount and accumulated interest of previous period. मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कब दे होता है, आप एक साल के लिए अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो वो दोनों सेम होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर पर जो आपका इंटरेस्ट पहले साल में आपने दिया है वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों पर आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो नेक्स्ट ईयर में दे होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल फिक्स रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ओवर द नेक्स्ट ईयर, मतलब जो हमने पिछले ईयर में इंटरेस्ट दिया है उस इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट देना होगा। ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन हियर। CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दे होता है, फाइन, accrues on the principal amount and accumulated interest of previous period। मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कब लगता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल फिक्स होगा। ठीक है, इट विल बी प्रिंसिपल, PAL, फाइन। And one thing, kindly note down here, if time period is given that is for 1 year, then SI and CI both will be same। SI और CI जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों सेम होंगे अगर हमारा टाइम पीरियड केवल 1 साल का है। ओके, and friends, so I'm going to give you all the details as per the some graphical pictorial representation। फाइन, अब मैं कुछ आपको ग्राफ के थ्रू और पिक्चर बना के आपको समझाना चाहूंगा कि बेसिकली क्या क्या चीजें कैसे अप्लाई होती हैं रियल लाइफ में। तो सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज आर द वेरी इसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी बिल्ड अप फ्रॉम हेयर ओनली। आपका कॉन्सेप्ट तभी बिल्डअप होगा जब आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। फाइन, सो फ्रेंड्स, थिंक अबाउट टुडे there is a person Ram, or we can say Raman, going to a bank, fine, and bank gave him 10,000 rupees, fine, at the rate of 10%. Next year when Raman, and second entry that is bank, when Raman will return the 10k amount as well as some interest, that is called the 1000, that means 1k.
Okay, so this thing, the extra money, that is called the interest here. फाइन. अगर रमन बैंक गया और बैंक ने रमन को 10,000 रुपए दिए, ओके, 10% की रेट लगाई, उसके बाद में रमन ने क्या किया, अगले साल उस बैंक को 10,000 वापस कर दिया और साथ में 1,000 रुपए ब्याज के दिए. तो ये वन के अमाउंट क्या हुआ, ये हुआ ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट. फाइन. एंड रमन विल बी borrower. Fine. And bank, it will be treated as a lender. Okay. And this is the rate percent, and this 10,000 amount will be treated as a principal amount. Fine. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या हुआ, ये 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हुआ. रमन क्या हुआ, बारोवर, उधार लेने वाला कौन हुआ, रमन हुआ. बैंक कौन हुआ, लेंडर, मतलब देनदार. बैंक ने क्या किया, पैसे दिए हैं, ये इंटरेस्ट रेट लगाया था. ठीक है, तो ये सारी एंटिटीज इस ग्राफ में यूज हुई है. एंड फ्रेंड्स, सी हाउ सिंपल इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, हाउ द वर्किंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कि हम साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट को हम साधारण ब्याज भी कहते हैं, साधारण ब्याज कैसे यूज होता है. अज्यूम टुडे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, and this one will be next year, and it will be 2 year, but rate it will be 10%. That is very general formula here. Fine. Assume this person is Ram and the bank is here. Bank gave 10,000 k amount to Ram for 10,000 and time, that is 2 year. Fine. So next year Ram will be charged as a 1,000 rupees interest. Okay, but he will return the amount after 2 years. That means next 2 year, that means Ram is here and bank is here also. Fine. So Ram will return the amount what he had borrowed, 10,000. So 10,000 he will return, and as well as he will return some interest here. So what will be the interest? For next year he paid 1,000 rupees, and for second year he will also pay 1,000 rupees. So it will be 1,000 plus 1,000, it will be 2,000 rupees to the bank. So what is the total amount of bank? Total amount, it will be 10,000 plus 2k, it will be 12,000. Fine. The bank will receive 12,000. Initially what bank given to Ram, the principal amount, that was the 10,000. फाइन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. देखिए, अगर आज की डेट में राम को बैंक ने 10,000 रुपए दिए हैं, कहा है कि 10% की रेट है और 2 साल के बाद आप हमें पैसे वापस दे देना, तो साधारण ब्याज से इस चीज को समझते हैं कि कैसे प्रोसेस हुए होंगे. तो नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो 1,000 रुपए जो ब्याज हुआ होगा और उसके अगले साल 2 साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो बैंक को पैसा दे देगा. तो राम ने 10,000 लिए थे, 10,000 तो राम ने पैसे वापस करने वाला है. साथ में एक्स्ट्रा मनी कितनी दे रहा है, 1,000 रुपए अगले साल का, और जो दूसरे साल का इंटरेस्ट था वो कितना दिया है, 2,000 रुपए. तो एक और एक 2,000 हुआ है, तो टोटल उसने कितना दिया, 2,000 रुपए. तो अमाउंट टोटल कितना गया, 10,000 प्लस 2,000, 12,000 बैंक ने अमाउंट रिसीव किया. फाइन. Now friends, let's understand the same process with the help of compound interest. इस प्रोसेस को हम कंपाउंड इंटरेस्ट से समझते हैं. Assume principal amount is 10,000, the same time is 2 year, and rate is what percent? Assume 10%. Fine. So this is the today here. Bank and Ram is here. Bank gave amount to Ram, that is 10,000 as a principal amount, and rate was the 10%. Fine. So next year
that is bank here and Ram here. Fine. So the total lending amount, that is 10,000 here, and Ram will also give to the bank 1,000 as a interest amount. Fine. So total borrowing of Ram, it will become 11,000. Fine. Because 10,000 plus 1,000, he had to return 10,000 amount plus 1,000 amount. So total, that is 11,000 borrowing amount टू राम. तो राम के पास अब कितना अमाउंट हो गया? 11,000 रुपए हो गया, क्योंकि 10,000 तो उसने लिया था, 1,000 उसका इंटरेस्ट भी हो गया. तो टोटल अब कितना है? अब 11,000. अब उसका इस पर इंटरेस्ट आएगा. सो द इंटरेस्ट विल बी चार्ज इन दिस अमाउंट. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स 2 year, so Ram will return the amount to bank as a 11k, as well as the interest rate over this amount 11k, that means 10% of 11,000, so it will be 1100. Fine. So he will also return 1,100 rupees to the bank as well as 11,000, because this 11,000 is a combination of 10,000 plus 1,000. 1,000 is the 10% of 10k, that is 1k. 1k is the interest here. So interest plus principal amount, that is here. Fine. So next year the charge will be over principal plus interest. Fine. That's why we are taking 10% of 11,000. Fine. So it will be 1100. So now finally bank will get the total amount, that is 11,000 plus 1100. Fine. I hope you all are understand. Okay. So it's the mechanism of compound interest. Okay. So friends, we will use certain things here. For principal, we will use P, and for amount we will use A here, and for interest we will use I here. Okay. And for time we will use T here, and for rate of interest we will use R% here. Okay. So these are the abbreviation that you should understand. But ultimately this is the introduction lecture, and after that we will start from the initial topic. First question will be in the next type. Okay. तो अभी तक हमने क्या सीखा कि क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में. तो मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल आपका सेम फिक्स रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हर एक साल में चेंज क्यों होता है? चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि अगले साल के लिए जो इंटरेस्ट आप पे लगा है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा. दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट मैकेनिज्म. फाइन. I hope your concepts will definitely clear from this video. If you have still any doubt, then do comment below this video, and after that we will make the first part of simple interest and compound interest. And friends, there will be approx 3 parts. 3 or 4 parts. We will cover each and every type of simple and compound interest problems. Okay. And friends, you can also find the information in our description section. आप description section में भी कुछ information देख सकते हैं. So like this video, comment or suggest whatever you think, and also share this video. Why? Because a lot of people will be benefit from here. And friends, subscribe our channel for regular updates. So today we are ending our lecture. Thank you. Have a nice day.